Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes. Okay, screen is visible now. Yes, sir. Okay, so people in town too, they have this frequency. So people who have height 2500, who have height 5.00 is like 4000, who have height 5.5, and that is like 7,250, and who have height 6 is like 1500. So mode will be this one. 5.5 is the mode in town 2. And well, I think it's understandable because that's the most frequently frequent height people have. Most often people have this height 5.5. So this is mode of the data. ठीक है, लेकिन अगर इसकी एवरेज निकालना चाहें इसी एग्जांपल की, अगर कहें कि एवरेज आम हर एक मतलब एक एवरेज पर्सन की हाइट कितनी है, यू विल सम ऑल दीज हाइट्स, sum all these frequencies, divide this with this one, this I mean total number, so sorry, multiply this group data and kind of, is it clear, right? Do you have any question? Okay, so this was example of there may not be a mode. In this case, there is no mode, and yeah, there can be several modes. So एक ही type of data, let's say, frequently occur कर रही है, लेकिन एक एट्रीब्यूट दो डिफरेंट क्लासेस का बिल्कुल सेम आ रहा है, तो वो ये एग्जांपल भी हो सकता है एज सच. ठीक है. Now this is the only measure of central tendency or measure of central जो categorical या qualitative data के लिए यूज होता है. okay, बाकी वो जो मीन थे या मीडियन थे वो आपके क्वांटिटेटिव डेटा के लिए ही यूज होते हैं, क्योंकि मीन में तो आपने सबको सम करना होता है और काइंड ऑफ, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा और मीडियम भी इसी तरह ही है. ठीक है, आपने कैटेगोरिकली असेंडिंग ऑर्डर, नॉट कैटेगोरिकली क्वांटिटेटिव डेटा को ये आप असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं, फिर उसमें मीडी जो बीच वाला नंबर होगा वो कर सकते हैं. कैटेगोरिकल डेटा में ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं, तो इसीलिए वहां पर भी आप मीन यूज नहीं कर सकते. ठीक है, मोड यूज कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल जी सर, हम जो मीडियन फाइंड करते हैं वो ग्रुप डेटा में फाइंड नहीं होता क्या? ग्रुप डेटा पे भी फाइंड हो सकते हैं, इवन मोड भी ग्रुप डेटा पे फाइंड. group data example. So I have these examples in let me come up with the planning I have done. So I hope your question will be. एक रिक्वेस्ट थी सर कि ये जो आप पीपीटी के ऊपर जो सॉल्व कर रहे हैं, ये वाली पीपीटी आप एलएमएस पे अपलोड कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो अपलोड कर दीजिएगा प्लीज. I think I have already uploaded. This should be your concern कि अगर ये नहीं मिलती तो नहीं सर, जो आप मतलब लाइव कर रहे हैं, जैसे कि ये आप हाँ एग्जैक्ट ये जैसे कमेंट्स हैं या फॉर एग्जांपल मैं एज इट इज अपलोड कर रहा हूँ. एग्जैक्टली, थैंक यू सर. आई थिंक दिस शुड बी योर कंसर्न. अगर ये चीजें आपको इसी तरह रिसोर्सेस नहीं मिलते तो या यू आर डिस्कसिंग और लिस्निंग समथिंग अबाउट समथिंग एल्स और कहीं और से पढ़ रहे हो या बुक से, तो या दैट विल कॉज
I can realize more confusion. Okay, so yeah, categorical का example में दे रहा था. For example, आप कहीं से एक data है, उसमें लोगों से पूछा गया है कि political party affiliation. The example we did in the very first class. So there are 4 different parties. ठीक है, एक पार्टी में 100 लोग हैं, एक में 150 हैं, एक में 200 हैं, एक में 250 हैं, kind of things. ठीक है. So now you can find the mode. जिस political party से ज्यादा affiliation लोगों की हुई, that will be the mode of the political party. अब इनका मीडियन नहीं कंप्यूट किया जा सकता पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि नो पॉलिटिकल पार्टी इज हायर देन द अदर वन. उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिख सकते हैं क्या? ठीक है. ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कंप्यूटिंग मोड. एक चीज जो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हो, अकर करती हो, जो वैल्यू ज्यादा अकर करता हो, जैसे नो इस डेटा सेट में 3 मरतबा है तो नो इज द मोड. एंड दिस डेटा सेट कोई भी मोड नहीं है, कोई हर वैल्यू जो है वो सिर्फ वंस और वंस ही अकर हो रहा है. ठीक है. ओके, आई गॉट या. Sir, should we take a break? अब मैं चाह रहा हूँ कि क्लास जल्दी एंड कर दूँ. इफ यू जस्ट आई मीन बी विद मी. अभी अगर ब्रेक लेंगे we will be ब्रेक तो दे दें सर. Listen, अभी अगर आप ब्रेक लें 15 मिनट का, we will be back by 2:30 और फिर इसको अगर 3:30 तक, तो मैं 3 तक हम अगर वाइंड अप कर दें तो इज इट फाइन? सर एक क्लास में ना बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, फिर वो समझ नहीं आते. पिछली क्लास में भी यही हुआ था सर. Okay. Just this example and then we are taking big example of mode. ठीक है. This is example of the mode. So very same example, the first one. This is data set. Okay. Salaries of weekly salaries of the persons working in the first half of the summer. The mode is the most frequently occurred value. So we need to basically define classes are the salaries. So 300 salary is there, 400 is there, 450 is there. First we need to do this thing, and then 800 is there, 850 no, 940 is there, and then 1050. How many persons are having 300 salary? So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So 6 persons are having salary 300. 2 persons are having 400 salary. 2 persons are having 450, and so on. So apparently the mode is like 300 in this example. Okay. And for the next example, we just have this table, and the most people have this salary 300. So the mode of this data mode is 300. Now this is important. Just to recall, the mean for this data was 4, 7. Let me be very sure के mean क्या थी. Just the exact one which I okay, example mean 474. Yeah, to be precise, 47. So 474 point. This was the mean, and this is the mode. Now 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, and then 8,
9 जी बच्चे पूछे 10 काइंडली अपलोड दिस पीपीटी या आपने नहीं डाली हुई एलएमएस पे? हाँ अभी तक नहीं डाली आफ्टर क्लास सेक्शन ओके सो मीडियन इज 10 data points है 5th and 6th 4 ये रहे 4 ये रहे 400 and 400 plus 400 divided by 2 this is example of median so this is 400 ठीक है now median is 400 mode is 300 mean is this one what do you think which value just gives you the center of the data do not forget these numbers represent weekly wages what computation of the measure of the center you would like to have आप मोड चाहेंगे मीडियन चाहेंगे मीन चाहेंगे for me mean is more important than mod and median. Exactly. So this example depending upon the nature the data is representing the mean is more important mode is not right mode will be important लेकिन अगर हमारे पास इन्हीं 10 लोगों की ये हो के 4 जो है पार्टी 1 से बिलोंग कर रहे हैं 3 पार्टी 2 से बिलोंग कर रहे हैं 3 दूसरे पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं एंड 5वीं पार्टी से 0 बिलोंग कर रहे हैं सो ठीक है तो वहां पर आप क्या करते हैं मीन नहीं लेते अगर यही डेटा होता ना कि इस तरह की सिचुएशन होगी पार्टी 1 नंबर ऑफ पर्सन्स पार्टी 2 पार्टी 3 पार्टी 4 इसमें 5 थे इसमें 3 इसमें 2 इसमें 0 अब मुझे बताएं कि इस डेटा को अगर प्रोसेस करना हो या रिप्रेजेंट करना हो व्हाट विल बी मोर इम्पोर्टेंट मोड मीडियन और sir mod will be suitable right choice so this is again more important to which measure you like to choose then computing is I mean it's much easier आगे चल के आप देख रहे होंगे कि जो आप कंप्यूटिंग कर रहे हैं आपकी जगह पर आपको कंप्यूटर भी करके दे सकता है एमएस एक्सेल करके दे सकती है ठीक है बट इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको एमएस एक्सेल से आप मोड लेना चाह रहे हैं कंप्यूट करवाना चाह रहे हैं फाइंड करवाना चाह रहे हैं या मीन या मीडियन तो दिस इज इम्पोर्टेंट ठीक है ओके मोड इज 3 and 500 यहाँ पर 2 मोड्स हैं इस एग्जांपल में but the question is again do we really need mode for this kind of data or not that's it that is the example of the mode let me close this one is this the main slide yeah okay so mode is there mode is gone example is gone and the last one in this measure of central tendency is the geometric mean now this is formula you multiply all the values and then take the nth root where n is the number of the sample size or number of sample size are the population size ठीक है this is mostly used for computing returns profit returns or return of the shares or insurances or उस चीजों में ये अगर वैल्यूज ज्यादा हो प्रीवियस डेटा उनको उनमें से कुछ डिसीजन लेने हो तो वहां पर ये ज्योमेट्रिक मीन जस्ट हैव इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस ज्योमेट्रिक मीन उसका एक एग्जांपल देखेंगे हाउ आई मीन it can be misperceived sometimes so this is example an investment of 0.1 million 1 lakh declined to this one so the invested was in shares or stock maybe and it was declined to 50,000 so decline rate was or the depreciation the rate was minus 50%. So from original to 50% at the end of year 1 and round it back to 100,000 so 1 lakh again at the end of year 2 so this is R1 is a 50% negative return rate
it at the end of the year 1. R2 is the return rate after end of year 2. The second year, what will be the average rate of return of these 2 years? पहले साल में 50% कम हुआ वैल्यू, फिर दूसरे साल में 50,000 से 1 लाख तक पहुंचा, तो इसका मतलब है 100% उसका रिटर्न हमें मिला ना। 50,000 का डबल हो गया तो 100% रिटर्न हुआ। दोनों सालों का एवरेज क्या होगा? आई एम जस्ट आस्किंग सिंपल क्वेश्चन। डू नॉट थिंक अबाउट सर 50% प्लस 100% अपॉन 2 करेंगे। 50% माइनस था, नेगेटिव, क्योंकि 1 लाख में से 50% हुआ था, नेगेटिव 50%। ठीक है, तो इन दोनों का सम होगा 75% डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह होगा, नहीं सॉरी, 50% डिवाइडेड बाय 2, तो मीन्स 25%। ऐसा ही होगा ना, जो सिंपल एवरेज। लेकिन अगर आप अपने ओरिजिनल अमाउंट को देखें, 1 लाख वाज इन्वेस्टेड, आफ्टर 2 years इट वाज स्टिल 1 लाख। 25% तो उस पर रिटर्न नहीं मिला। क्या ख्याल है? अमाउंट तो सेम रहा ना, लेकिन आपको एवरेज जो मीन बता रही है वो ये बता रही है। सो मीन इज नॉट अ प्रॉपर वे टू कंप्यूट दीज रिटर्न्स। चूंकि एक प्राइस आ गई, फिर उसी पर वो दूसरा रेट लग रहा होता है। सो रिकर्सिव काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पर अगर ज्योमेट्रिक रेट ऑफ रिटर्न या ज्योमेट्रिक मीन निकालें, दैट विल बी मोर appropriate. So this is formula like 1 plus rate of return times 1 plus rate of return 2 times this power this minus 1. So 1 minus 0.5 नेगेटिव होने की वजह से times 1 plus 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 by 2 because only 2 rate of return से total minus 1 किया, then you get 0. So of course 1 lakh से start, after 2 years, end of the second year 1 लाख ही रहा, तो रेट ऑफ रिटर्न आपका 0 ही रहा। इन बिटवीन ये जो सारी एक जगह पे 50% डिक्लाइन, फिर 100% इंक्लाइन, इन दी एंड 0, ये ज्योमेट्रिक मीन से मिलता है, जो प्रीवियसली स्पेशली ये जो शेयर्स पे कंप्यूट करते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स एंड काइंड ऑफ थिंग्स, सो दिस रिटर्न। ठीक है, दिस इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ठीक है, ये इतना ज्योमेट्रिक मीन स्टैटिस्टिक्स में या डेटा के साथ इतना यूज नहीं होता। Alright, this is comparison for that particular example. I think we talked about this. How to select the appropriate measure. There is no rule of thumb or the list of practices कि आप कौन सा use करें. Every practices can be can bite your back, or I mean can bounce to you, or can be really a good approach. So yeah. So it's only, I mean, I would suggest कि intuitive आप अपनी feeling से decide करें data set कौन सा है वहाँ का। I know most of you would be worried कि exam में कौन सी intuitive. I would just, I mean, accept your intuitive feeling if you have a proper argument behind it. No worry. Because there is no final word about choosing which appropriate, I mean, measure should be chosen. Even different experts use different one in the advanced level in the research or something like that. ठीक है, there are pros and cons, negative and positives of all these three. So these are kind of listed, but this example might help you कि आप कौन सा use करेंगे. So for example, a student give his course, takes these courses, 5 courses, give me 5 courses in the 3rd semester. Okay, so these are the 5 courses, and these are the marks. My question is, what measure of center is the student likely to report? अगर इसका मोड निकाला जाए तो कोई भी मोड नहीं है। ठीक है, अगर मीडियन निकाला जाए तो 88 is the median, और अगर मीन निकाला जाए तो that
will give us somehow computed average. So which one best suited for this example, for this data type? What do you think? Do you have any other opinion than this mean? I hope not. Now this is another example where the median is really preferred. Okay, so these are the prices of the houses, very small sample with some real estate agency. उसने जो list से माजी में जो 8-10 घर सेल किए हैं, I mean this was 64 lakhs, 72 lakhs, 70 lakhs, 58 lakhs, ये average price एक normal जो neighborhood में. There was one really, I mean, outliers, and he sold some house of like 2.45 crores. Okay. If you take mean of these all numbers, so this outlier will severely affect all these numbers. ठीक है, तो यहाँ पर median लेना, it will be more appropriate. What do you think? Any contrasting opinion will lead us to healthy discussion maybe. Anyone likes to contribute? Sir, why median here will be preferred? मीन की ले सकते हैं. मीन आप ले सकते हैं. I mean, the question is preferring. Of course, there is no restriction. मना नहीं है. I mean, I already told you it's intuitive कि आप choose क्या करते हैं. So, what do you prefer? What would you prefer? आप prefer क्या करेंगे? सर why median preferred करेंगे हम, ये पता है. आप एवरेज ले लें, देखें क्या आती है एवरेज. सर वो तो एवरेज को तो ये आउटलायर जो है वो डिस्टर्ब करेगा. Exactly. So this is one simple reason I wouldn't like to choose average, mean. तो अगर मुझे किसी को बताना हुआ कि यार ज्यादातर घर जो है किसमें बिकते हैं, I will just take one median number जो है वो पिक करूंगा. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Two values will be in mid and average of these two. And those two values will be, this is minimum one, I guess. No, 5.2 is minimum one. This is second, and then third, fourth, fifth. No, I need to mention this out. So this is first, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth, 7, 8. Oh my goodness. Where is 4? This is 4. Now this is 5. This is 6. This is 7. This is 8. This is 9. And this is 10. So where is the fifth and sixth one? 6.5 and 6.6. So 6.5 plus 6.6 divided by 2. This is like 6.55. This is median. और mean क्या होगी? Can you just compute quickly the mean? 8.8, 5.2, 6, 6.6, 6.7, 6.5, 24.5. Now the average is, you would be astonished, I hope. Yeah, जिसको आप mean भी कहते हैं, that is 8.19. Does this correspond to the correct number? No. So what number would you, Meyer, would you like? Median, of course. I would love to listen. Sorry, I just stopped
interrupted you. Someone was talking. Sir, I was just telling the mean. I also calculated. Okay, so this is same, I hope. Yes, sir. Yeah, I didn't calculate that. Excel helped me, so I can. Okay. Okay, I think I made my point. So if you have any question, you can even write me later on or just ask questions. So this is a third thing. Well, I already highlighted where mode is important. But look, this is a very interesting example. Let me explain in my own words, maybe. So if you have a new business head, like, there is any, yeah, if you have a new business and you want to advertise that business on the Facebook, so Facebook usually asks you which age group would you like to target. Okay. Now, for example, your business is about selling glasses, imported glasses, goggles. Okay. And from any market survey or your intuitive feeling of marketing, you already know the people between 20 to 30, they frequently use fashion goggles, glasses. Is it correct? And very few people use goggles between the age of 30 and 40, 40 and 50, 50 and 60, and so on, or even 10 to 20 kind of thing. So 20 to 30, let's say, or 30 to 40, you would like to target those things. So this is model value. You will use mode क्योंकि उसमें frequency ज़्यादा है लोगों की Google's use करने की from any marketing survey or the result. Does it make sense? So where mode is important, so depend upon the data and the situations. Okay, these are other comparative properties of 3D. I think I talked again already about these properties, extremely high or low values called outliers and things. So they're just written here in this form. So this is the last problem. It's left for exercise. So if you will do it now, I will end the class. And just quickly answering that question कि किसी ने कहा था कि median or mode group data का हो सकता है. So this is just the first couple of slides are. Is these inequalities visible to you? X less than 2. Yes, sir. Okay. Yes, so, sir. So this is just a revision of the numbers and kind of thing. These will help you to define classes and classes and kind of thing. But I think you are already aware of these. So, okay, so example number 1, during 3 hours at the airport, 55 aircrafts arrived late. 10 minute late इतने हुए, 20 minutes late इतने हुए, 30 इतने, and so on. तो ये टोटल आपको 55 मिलेंगे. 1 घंटे से ज्यादा जो लेट हुए वो सिर्फ 2 हुए. ठीक है. So ठीक है. So this is example, and the first thing is computing mean. This is mean. You can see 4 columns, midpoint and multiplication, and their multiplication 2 times 55, 110. Then summing all these, division, you get this one. So average, mean 16.8. Every aeroplane just was it. So model class 27 is the mode. The more frequent जिस class में aeroplanes late थे. 10 minute बहुत ज़्यादा planes late. 27 is the model, 0 to 10. So this is model. ठीक है, for the group data. And median class interval is, you just take the mid value. ठीक है, और वो आपका कितना टोटल कितने थे? 55 frequency, 28. So the median mid वाला pitch वाला जो value था वो कौन से class में आया? The 28th plane fall in this class. So this doesn't give proper information about this group data.
ये मॉडल वैल्यू आप क्या सॉरी मीडियन क्लास इंटरवल या मीडियन डेटा ग्रुप डेटा का आप क्या करेंगे? डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। ओके, सिमिलरली सेकंड एग्जांपल, इसमें भी ये तीनों चीजें की गई हैं। फर्स्ट मीन है ये, एंड देन मॉडल, एंड देन मीडियन इंटरवल, ठीक है। Median. I would like to discuss these examples in the next class if you intend, but I think these are very self-explanatory. I will upload the slides. This was just about all about today's lecture. I hope message will be about break, and yes, it's about break. So we are about to end today's class. Let me recall. I will ask you in the next class कि हमने क्या discuss किया. Measure of central tendencies, mean, mode, median for raw data, for group data, and also geometric mean. Something about geometric mean. Their pros and cons, कहाँ पर कौन सी use होती है, and kind of things. That was it. Anything you want to ask? Any comment? Any feedback? Otherwise, we will just wind the class up for 2 days. See you next week on the campus. क्योंकि अभी email आ गई है कि हम next week campus पर होंगे. Anything? Any comments? Okay then, guys. जी. Can we have a few days more for that assignment? Can you just say it It's again? The assignment we got last week. Can we take another day or two with it? You mean the deadline, right? Yeah. Yeah, just finish as soon as you can. Otherwise, I mean, if I don't see more submission, I will just upload another assignment. ठीक है. Okay, sir. तो बेहतर अगर ज्यादा सबमिशन है तो मैं शायद दूसरी असाइनमेंट ना बना लूँ वहाँ पर, तो it will just make me happy कि सारी सबमिशंस हैं, everyone is doing well. So अगर नहीं होंगी तो मैं दूसरी असाइनमेंट दे दूँगा. It's like सर बस एक रिक्वेस्ट है please. सर, वो जैसे